ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अम, आज हम CompTIA का चैप्टर नंबर 22 डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू troubleshooting theory, operating system and security. This training is being conducted by Loyal Tech and Security. अगर आपको कोई भी questions हो, make sure to type them in the comment section. If you have any concerns or any other videos you would like to watch, post them in the comment section as well. Make sure to like and subscribe and hit that bell notification icon. ठीक है, चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 22 ट्रबल शूटिंग थ्योरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसमें आज हम कवर करेंगे ट्रबल शूट पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स विद अप्रोप्रिएट टूल्स, ट्रबल शूट कॉमन पीसी सिक्योरिटी इश्यूज विद अप्रोप्रिएट टूल्स एंड उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ट्रबल शूट करेंगे कॉमन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इश्यूज विद अप्रोप्रिएट टूल्स। गिवन अ सिनेरियो, उसके अंदर हम ट्रबल शूट करेंगे कॉमन मोबाइल ओएस एप्लीकेशन विद सिक्योरिटी इश्यूज, द अदर वन वाज द एप्लीकेशन इश्यूज, and explain the troubleshooting theory. So troubleshooting theory, identify the problem. सबसे पहले तो question the user and identify user changes to computer and perform backups before making any changes. सबसे पहले जो ये basically इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताएंगे कि step by step how do you identify the issue. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू आस्क द यूज़र कि प्रॉब्लम क्या है, हैव दे डन एनी चेंजेस टू द कंप्यूटर, क्या कोई नया सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया है। यू आस्क दोज क्वेश्चंस, देन बैकअप करने का, यू शुड क्रिएट अ बैकअप बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। ठीक है, देन एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ probable cause, question the obvious, if necessary conduct external or internal research based on symptoms. तो कोई उसका जो cause है वो पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने की, अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल, विच इज़ गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें अभी एक इशू आया था, कंप्यूटर था हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो बिफोर वी डाइव्ड इनटू रिपेयरिंग इट हमने यूज़र से क्वेश्चंस पूछे थे पहले कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू, उन्होंने इनिशियली क्या किया था, हैव दे इंस्टॉल्ड एनी सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, एंड बेस्ड ऑन दोज रिस्पॉन्सेज हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम, वेयर डज द प्रॉब्लम लाइज। नाउ द नेक्स्ट, टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज. Once theory is confirmed, determine next steps to resolve problems. If theory is not confirmed, re-establish new theory or escalate. तो थ्योरी बेसिकली आप सोच लें कि कैसे रिपेयर करना है, बेस्ड ऑन दैट यू मूव फॉरवर्ड। सो हमारे फॉर इंस्टेंस हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो था पावर सप्लाई का इशू। पावर सप्लाई वाज डेड एंड एवरी टाइम आप बटन ऑन करें कंप्यूटर का वो ऑन नहीं होता था। तो we took the power supply out. We first asked the questions to the users. User told us that this is happening with the system. We brought it in. हमने उसको टेस्ट किया. We created our own theory. Okay, first theory we created was let's remove the power supply from the other computer and the computer which is working and put it into a computer which is not working. That is the first step, because अगर उसके अंदर पावर नहीं आ रही है I cannot move on to the next step, meaning operating system का issue है या कोई other hardware का issue है, जब तक से उसमें पावर नहीं आ रही है. So you have to troubleshoot anything step by step. पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उस चीज़ के अंदर पावर आ रही है. सो दिस इज द थ्योरी. यू हैव टू क्रिएट स्टेप बाय स्टेप्स थ्योरी to resolve the issue. Then after that establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. इन हमारे सिनेरियो में हमने थ्योरी बना दी, वी आइडेंटिफाइड द इशू, फिर हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया. प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये था कि पुराने कंप्यूटर में से पावर सप्लाई निकाल के नए कंप्यूटर में डाल के वी विल टेस्ट इट. Then verify full system functionality and if applicable implement preventive measures. So हमने उसको टेस्ट किया
और दूसरा पावर सप्लाई लगाने के बाद द सिस्टम स्टार्टेड वर्किंग फाइन एंड दैट इज व्हेन वी परमानेंटली इंस्टॉल दैट पावर सप्लाई। दूसरी कंपनीज के अंदर जो बिग कंपनीज में आप काम करेंगे, एवरी स्टेप यू डू यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग्स, योर एक्शंस एंड योर आउटकम्स। जो भी आपने फाइंड आउट किया वो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट करना होता है कि दिस इज द स्टेप्स आई टुक टू आइडेंटिफाई, ये एक्शंस मैंने लिए, मैंने पावर सप्लाई को निकाल के दूसरे में डाला, इसमें डाला, ये किया वो किया, ये एक्शंस आपको राइट डाउन करने पड़ते हैं। और उसके आउटकम, उसका जो आखिरी रेजोल्यूशन क्या हुआ कि मैंने ये पावर सप्लाई निकाल के उसको इंस्टॉल की और वो चलना शुरू हो गया। सो दैट इज द आउटकम एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दिस, especially if you work for a big company and if you work for like healthcare, hospitals, financial industry, you have to keep records of that. Some solutions may actually cause another problem on the system, so carry a personal notebook and take notes. कभी कभी एक इशू को रिजॉल्व करने के अंदर कोई दूसरा इशू ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज एक इशू इज रिलाइंग ऑन द अदर इशू। तो एक इशू को फिक्स किया, दूसरा इशू आ गया। सो द बेस्ट वे टू डू इट, अपना पर्सनल लैपटॉप नोटबुक अपने साथ रखने का, बिकॉज टेस्टिंग जब करनी होती है you can run some tests directly onto your laptop because you know your laptop is working fine. And then notes lena is very important. Okay, common operating system के problems क्या है? Proprietary crash screen, जो वो blue screen आ जाती है, crashes, BSOD, pinwheel, kernel panic, ये सब वो blue screens जो हैं, it's talking about that. फिर है failure to boot, improper shutdown, spontaneous shutdown restart, device fails to start or detected, missing DLL message, which is a DLL file, and service fails to start. So starting with the BSOD, what is that? So more likely than not, the problem is related to a misconfigured driver or misconfigured hardware. Try booting Windows in safe mode. बेसिकली क्विकली इसमें बता दूं, ये जो क्रैश स्क्रीन के जो ब्लू स्क्रीन आती है ना, उसके अंदर अमूमन जो प्रॉब्लम होती है कि कोई जो ड्राइवर होता है सिस्टम का वो मिसकन्फिग्योर्ड हुआ होता है, या तो आपने कोई रिसेंटली नया हार्डवेयर डाला हो, फॉर एग्जांपल ईथरनेट कार्ड और वाईफाई कार्ड या हार्ड ड्राइव या व्हाटएवर, रिसेंटली कुछ चेंज किया हो, उस बेस के ऊपर भी ये ब्लू स्क्रीन आ जाती है। तो फर्स्ट थिंग उसके अंदर आप ये ट्राई करें, उसको सिस्टम को सेफ मोड में स्टार्ट करें। सेफ मोड में क्या होता है, वो सिर्फ बेसिक ड्राइवर्स को लोड करता है, जैसे कि VGA ड्राइवर जो कि मॉनिटर के ड्राइवर होते हैं, कीबोर्ड, माउस, एंड द बेसिक कर्नल मीनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक ड्राइवर्स। तो दूसरी जो एप्लीकेशंस के ड्राइवर होते हैं वो उसको लोड नहीं करता है। सो अगर आपकी किसी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो सेफ मोड के अंदर वो सिस्टम चल जाएगा, एंड देन यू रिपेयर दैट प्रॉब्लम इन सेफ मोड एंड देन रीबूट इन ए रेगुलर नॉर्मल मोड। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दैट। नेक्स्ट, फेलियर टू बूट, जब वो बूट ही ना हो रहा हो। टू troubleshoot boot problems, you must understand the Windows boot process. Boot manager, which is an NTLDR, first file to load bootstrap. ये जो दो फाइल हैं, boot mgr and NTLDR, ये दो फाइल्स जो हैं they are the first one to boot. अगर ये files are missing for whatever reason, either intentionally deleted or virus deleted it or whatever, or this file has been renamed even, तो आपका विंडोज स्टार्ट नहीं होगा। सो इन दैट केस you want to reboot, or you can do a fix like a repair. और वो कैसे होता है, हर सिस्टम के अलग अलग कीज प्रेस करनी पड़ती है। फॉर दैट यू विल हैव टू चेक द मैन्युफैक्चरर मैनुअल, बट अमूमन to boot you can press F8। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो तब आप F8 की दबाएंगे तो वो पूछेगा आपको कि कौन से किस चीज़ के अंदर आपको बूट करना है, and then from there you can boot your system. Next we have is improper shutdown. Basically, what is the improper shutdown? It's
Improper shutdown is like, not shutting down properly can result in lost data from open applications or corrupted operating system files. जैसे हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है और पावर चली जाती है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा जो खुला हुआ था वो लूज हो जाएगा. तो अमूमन अगर आपका कोई वर्क का कंप्यूटर है, इट्स बेटर टू प्लग दोस कंप्यूटर टू अ बैटरी बैकअप. बैटरी बैकअप जो है 2 या 3 मिनट आपको दे देगा. इवन दो द पावर गोज आउट, कंप्यूटर विल स्टिल बी रनिंग. It will give you 2 to 3 minutes depending on कितनी devices उसके ऊपर connected है, and then you can properly shut down your computer to prevent file or data losage. Okay. The next we have is spontaneous shutdown restart. While it could be indicative of a hardware problem, malfunctioning motherboard for example, it can also indicate a setting misconfiguration problem. Check the sleep setting for hibernation and disable those to see if it makes a difference. If the problem continues, start looking at drivers. Spontaneous shutdown में कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर आइडल होता है और वो शट डाउन हो जाता है. सर फर्स्ट चीज़ आपको इसमें चेक करनी चाहिए वो है स्लीप सेटिंग्स. पावर की जो सेटिंग्स होती है कंप्यूटर के अंदर, आप जाएंगे, यू टाइप इन द क्लिक ऑन स्टार्ट एंड यू टाइप इन पावर सेटिंग्स. पावर सेटिंग्स में आप जाएंगे, you will see settings over there for sleep, hibernation, hard disk turn off and things like that. Change those settings to never. Okay, never sleep, never hibernate, never turn off the hard disk and see if that problem goes away. If उससे problem fix नहीं होती है, then आप अपने drivers check करना शुरू करें. There has to be one of the drivers which is causing this issue. Next we have device fails to start or fails to detect. Windows driver that must be loaded in order for Windows to be able to use any device. If you have just updated a driver and the device isn't functioning, rolling back the driver installation can sometimes resolve the problem. अमूमन इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम आपको आता है ना, जो कोई डिवाइस नहीं चलता है, वो हमारा सिक्योरिटी अपडेट्स या विंडोज़ के अपडेट्स होते हैं. एवरी डे, एवरी मंथ, व्हाटएवर यू हैव द सेटिंग्स डन मेड फॉर, वो अपडेट्स होते हैं. समटाइम्स इट आल्सो डाउनलोड्स ड्राइवर्स इन दोज अपडेट्स डिपेंडिंग ऑन आपने क्या सेटिंग सेलेक्ट की है. और जब वो डाउनलोड्स हो जाते हैं ड्राइवर, समटाइम्स दैट ड्राइवर इज़ नॉट कंपैटिबल और इज़ क्रिएटिंग एन इशू विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसकी वजह से ही आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है. सो द फर्स्ट थिंग यू कैन ट्राई इज रोल बैक द ड्राइवर. विंडोज हैज़ एन ऑप्शन वेयर यू कैन रोल बैक द ड्राइवर्स टू द ओरिजिनल स्टेट. बाय डूइंग दैट आप यू विल, अगर समझे आज मेरे सिक्योरिटी अपडेट्स स्टार्ट हुए, इफ़ आई रोल बैक तो मेरे जो आज के अपडेट्स इंस्टॉल हुए थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे और जो कल के जो ड्राइवर्स थे वो वापस आ जाएंगे. Then if that fixes your problem, then you know that there's something in that update which is causing that. अब update के अंदर 50 चीज़ें आती हैं. It's not just one thing, right? So you have to manually check each one of them and just identify which one is the problem. Then we have missing DLL message, which is a missing DLL file. DLL stands for Dynamic Link Library. These files are required. They were mentioned earlier in the section, failure to boot. The problem of missing DLL files can also occur with application when you attempt to start them. And the solution involves finding a copy of the DLL file online or backup or so on and replacing it. Basically DLL file जो है वो ऊपर मैंने जो बात की थी, अगर कोई फाइल मिस हो जाती है then आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा. That DLL file is one of those files. अगर सिस्टम के अंदर से वो DLL फाइल अगर मिसिंग है, आपका कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट. यू विल गेट दैट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट विच एप्लीकेशन की DLL फाइल इज मिसिंग. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की DLL फाइल मिसिंग है, सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा. अगर आपको पता है एग्जैक्टली कौन सी DLL फाइल मिसिंग है, इट्स वेरी सिंपल फिक्स. ऑल यू डू, किसी भी दूसरे कंप्यूटर में से जिसका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो फाइल को कॉपी करके आप इसमें डाल दें, इट शुड वर्क. But you have to make sure that you put exactly at that same location where it belongs, and that will work. It will pick up from there. Then we have service fails to start. Service, अगर आपको पता है, मैंने आपको एक सेक्शन बताया था कि आप
जब विंडोज़ स्टार्ट होता है, सर्विसेज, एवरी एप्लीकेशन की अपनी अपनी सर्विसेज होती है, वो भी स्टार्ट होती है। और अमूमन 2-3 सर्विसेज होती हैं जो स्टार्ट नहीं होती हैं। This problem can come from any number of sources, including an improper installation, a software conflict, or system instability. तो improper installation की वजह से हो जाता है। Again, Windows update की वजह से भी ये services कभी on नहीं होती हैं। The best way to do this is to check directly by going on to the services section and see why they're not starting, or you can go into the event viewer as well and check. इवेंट व्यूअर के अंदर वो आपको सारी डिटेल देगा कि ये सर्विस फेल टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दूसरे कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं, कंपैटिबिलिटी एरर आते हैं हमें, स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, बूट्स टू सेफ मोड, नॉर्मल बूट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली सेफ मोड में चला जाता है, फाइल फेल्स टू ओपन, कोई भी फाइल खुलती नहीं है बराबर से, missing NTLDR file, missing boot configuration data, and missing operating system. So compatibility error क्या है? If Microsoft does not digitally sign your device driver, that is, it hasn't been tested for compatibility with your version of Windows. Compatibility error basically ये है, Microsoft Windows आपको ये बोल रहा है कि जो ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, किसी चीज़ का भी ड्राइवर, साउंड का, VGA का, नेटवर्क का, जो भी, अगर उसमें से कोई भी ड्राइवर इज़ नॉट साइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मीनिंग माइक्रोसॉफ्ट ने इस ड्राइवर को टेस्ट नहीं किया है, तो वो आपको कंपैटिबिलिटी का एरर दे सकता है। काफ़ी चाइनीज़ इक्विपमेंट आप इंस्टॉल करेंगे ना, वाईफाई कार्ड्स एंड नेटवर्क कार्ड्स एंड इवन साउंड कार्ड्स, सम those are not signed by Microsoft. Not some are, like Chinese की big companies के are signed, but some others are not signed. Slow system performance कैसे होता है? Basically, here it's telling you that in Windows you can click on Start, go to Control Panel, and click on Troubleshooting, and check for performance. Performance issues. The performance troubleshooter will look for common problems such as more than one virus detection program running, multiple users log into the same machine at the same time, visual settings affecting performance, and so on. तो ये एक टूल है performance troubleshooter, जो आप basically you go to start, then you go to control panel, and then आप जाओ troubleshooting के अंदर, वो मिलेगा आपको। Once you run that, it should scan your system, और वो बताएगा कि क्या आपके सिस्टम के अंदर 2 एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, या तो आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स आर लॉग्ड इन एट द सेम टाइम, या तो फिर जो विजुअल के जो VGA ड्राइवर्स हैं, इट्स कॉजिंग द स्लोनेस। तो these things can also cause slowness. Though antivirus is always going to fight with each other. One will say no, I'm the priority, the other one will say I'm the priority, so it will always have some type of issues. Then you can also scan for virus, delete programs that you never run, remove items from startup, and defragment the hard drive. Defragment, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले बताया था, ये वो बेसिकली ऑर्गेनाइज कर देता है डेटा चंक्स को. So, or again, scanning for virus or malware, that could also be slowing down your computer. Then boots to safe mode, often associated with a damaged missing driver. Fix is boot to the last known good configuration or resort to the recovery DVD. तो बार बार जब सिस्टम, अगर आप देखोगे कि वो खुद ब खुद सेफ मोड में चला जाता है, अगर ऐसा हो रहा है तो कोई ड्राइवर का इशू है या कोई डैमेज ड्राइवर का इशू है. तो इसके अंदर जब आप बूट करें, F8 दबाएं आप, ठीक है, F8 दबाते रहें जब तक से वो स्क्रीन ना आ जाए. उस स्क्रीन के अंदर लिखा हुआ होगा boot with safe mode with networking, normal boot and few other options. And then एक ऑप्शन नीचे लिखा होगा boot to the last known good configuration. जो लास्ट गुड कन्फिग्रेशन थी जिसके अंदर सिस्टम चला था, वो वाली कन्फिग्रेशन के ऊपर विंडोज़ को चलाओ. तो उससे क्या होगा, जो भी मिसिंग फाइल होगी ना, वो रिकवर हो जाएगी. सो दैट्स वन ऑफ द ऑप्शन टू गेट दैट फिक्स्ड.
The file fails to open. When a file fails to open, it is often due to corruption. जब फाइल खुलना नहीं खुलती है बराबर से, तो उसका यूजुअल प्रॉब्लम यही होता है कि कोई फाइल जो है उसके अंदर वो करप्ट है. रीइंस्टॉलिंग दैट सेम सॉफ्टवेयर यूजुअली फिक्सेस दैट इशू. Missing NTLDR. Missing NTLDR is basically missing boot.ini file, जो कि बहुत ही essential file है to boot for the booting process. इस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कहाँ से इसको बूट की इनिशियल बूट का कर्नल को उठाना चाहिए, कौन सी बूट सीक्वेंस उसको उठानी चाहिए. इफ दिस फाइल इज मिसिंग, it's like a GPS for a computer. अगर ये नहीं है, computer is not going to know what to do. So computer will not start. The file can be retrieved from the recovery console or from bootable media. आप recovery console से recover कर सकते हैं, जो कि it shows up when you're starting the system. Recovery console should show up, or you can insert a DVD or a USB. Boot the operating system through the USB, and you can click on repair. They have a repair option and it will repair all the missing files. Missing boot configuration data. Boot.ini file is used to identify the operating systems installed, their locations and the boot options to use. जैसे कि मैंने बताया, ये फाइल जो है boot.ini, ये उसका GPS है, बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. This is a text-based file that can be recreated using any text editor. इसके अंदर बेसिक टेक्स्ट फाइल होती है, आप उसके अंदर जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, you can manually create that also, and as long as you give it a proper extension, which is the boot.ini, that file will work. When this file is missing or damaged, you can recover it by booting into a recovery console. So this is the same thing they were mentioning above for the NTLDR. Missing operating system. If you are using GRUB, which is a Grand Unified Bootloader, which is a bootloader for the operating system, as a multi-boot loader, you can encounter problems if they become corrupted or deleted. To resolve it, recreate the loader and reconfigure it for your system to be able to use it. ये bootloader की जो file है, that usually loads the operating system. If this file is also missing, then you could encounter the problems where the operating system will not be located or it will not be able to boot. So as आप देख सकते हैं कि जो DLL फाइल है, if .ini फाइल है, और ये grub load की जो फाइल है, bootloader की फाइल, if any of these files are missing, आपका operating system will not work. तो ये सब याद रखने की चीज़ है, because अगर when you come across a problem for your company, or the system is not starting, these are the first thing you should look at. कि system start, power आ रही है but system start नहीं हो रहा है, so what is missing in the system? Then we have missing graphical interface, which is GUI, and it fails to load. Missing GRUB, LILO, multiple monitor, misalignment and orientation. So missing GRUB and LILO, basically LILO is Linux loader, that's what it means, and GRUB is Grand Unified Bootloader, that's what that means. If you have any issues with that, the best thing to do is to recreate the loader and reconfigure it to use it on your system. Recreating this is the best way to get this issue fixed. Multiple monitor or misalignment, it's usually either a configuration settings in the display settings, or the wire issue where आप दो वायर को कनेक्ट करके, एक वायर को कनेक्ट करके दो मॉनिटर चला रहे होते हैं. The wire could be the problem as well. Missing graphical interface GUI fails to load. Usually जो explorer.exe की जो फाइल होती है आपके विंडोज़ के अंदर, अगर आप उसको, अगर वो फाइल करप्ट है या तो वो फाइल अगर आपकी नहीं चल रही है, then ये GUI will turn off. You can check that on your own also. Let me show you real quick. Hold on.
मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, टास्क मैनेजर में जाता हूँ, सो टास्क मैनेजर के अंदर ये विंडो खुलती है। इसके अंदर यू विल सी ये देख रहे हैं विंडोज एक्सप्लोरर। सो इफ आई क्लोज दिस विंडोज एक्सप्लोरर, ये जो GUI है ना वो सब बंद हो जाएगा। So if you're not getting the GUI, just make sure this file is open. What you can also do is you can go run new task. Let's say if it's not कोई आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, you can type in explorer.exe, ठीक है, and then I'm not going to do that here because it's already running. You can type this, you can click OK, और आपका जो GUI है, जो graphical interface है, is going to come back. ठीक है। Operating system tools: BIOS, UEFI, SFC, logs, system recovery options, repair disks, pre-installation environments, and MSCONFIG. BIOS stands for Basic Input Output System. That's what BIOS stands for. And UEFI stands for Unified Extensible Firmware Interface. Keeping the most current version of firmware on these devices can sideline a plethora of problems. कितने problems आपके इसी से solve हो जाते हैं basically. BIOS के जो firmware है should always be updated for security reasons and for operating reasons. SFC, the purpose of this utility is to keep the operating system alive and well. The file जो है वो होती है sfc.exe. Automatically verifies system files after a reboot to see if they were changed to unprotected copies. SFC file is like a police officer, वो check करता है files, अगर कोई files के अंदर changes हुई थी, अगर anything is corrupt, ये file basically उसको बताता है कि these things were changed. Logs. Log files are created to record significant events. Those events can range from system problems to just normal user activity. ये logs जो हैं कहाँ save होती है? I'll show you. If you go to start, type in event, और आ जाएगा event viewer ऊपर, you hit enter, ये window खुल जाएगी. This window will show you a lot of logs. So if I go to Windows log and I go to click on system, ये सारे systems के log अभी load करेगा. This probably has a lot of logs. Actually 18,000 logs showing. Should come up. There you go. So ये लोड हो गए और ये वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था. ये इसके अंदर कोई भी इश्यूज होते हैं ना, दिस विल टेल यू एवरीथिंग. सो I stands for the information, which is just the information, but the main problem is like the warnings or errors or things like that. So अभी इसमें 18,000 logs हैं. You cannot go through each one of them. So you can come here, click on filter current log. अब इस पर क्लिक करके you can click narrow the search, critical, error and warning. मुझे खाली यही देखना है अभी. और ये देखें ये वार्निंग के कितने साइन आए हैं. आज लिटरली अबाउट 1 hour ago कोई वार्निंग का साइन आया. वो एक्सप्लेनेशन भी देता है इधर. The application specific permission settings do not grant local activation permission for the COM server. तो वो आपको इश्यूज भी उसका जो पूरा समराइज वर्जन भी बता देता है कि what exactly is the issue. किस ये जो है SID, this right here, this is the registry key. This entire thing is a registry key. The registry is like it's like a collection of the entire binary language. Okay, machine language. That's the registry. 12121212. That's all it is. But
it converts into hexadecimal and all that. But anyway, ये देखें दूसरा ब्राउजर का browser service was unable to retrieve a list of servers from the browser master on the network device. So सारे ये जो आपको बताता है, these are the logs. Okay, you can open these logs, you can save these logs, you can do whatever you want with that. So that was warning. Then we have error. The driver detected an internal driver error on this device VBox. कोई VBox करके है, which is I'm assuming it's a virtual box. उसके अंदर देखें ड्राइवर का कुछ इशू आया है. So it tells you शायद virtual box हम ऑन करें, it may not run, or it might run with some error. तो कोई भी error आए, you can always come to event viewers and you can check. वैसे ही देखें दूसरा virtual box का है. I'm looking for something else. Virtual box. A lot of virtual box I'm seeing here. Yeah, these are mostly all virtual box. So you get the idea what the event viewers are. Okay. Then we have system recovery options. System recovery options allows for troubleshooting system problems. Two of the most important commands are bootrack / fixboot and bootrack / fixmbr. First command आप अपने रिकॉर्ड में लिख दीजिएगा. ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर you can type this bootrack / fixboot. दूसरी कमांड bootrack / fixmbr. Just remember these two commands. It helps with the boot fix or the boot recovery. ठीक है? These are the two commands. Now, to work with the master boot record, the utility boot CFG does a job similar to bootrack rebuild, and it is a bit easier to work with. So दूसरी दो command they have mentioned here is boot CFG and bootrack rebuild BCD. These are usually used to repair any boot problems or run the boot disk check. Alright, next we have is repair disks. If you want to recover your computer and bring it back to the point where it was when it was new, minus any files that you added since purchasing the machine, like basically original condition में उसको लाना हो अगर, you can use the recovery CD, set or DVD, or in today's world you can use the USB. With Dell computer, for example, this is known as the reinstallation DVD. Dell के computer के अंदर reinstallation DVD आती थी. अब basically you get the USB or you just get the online software USB पे download करके boot करें, and then you can recover previous version just by booting with that. Pre-installation environments. The Windows pre-installation environment, which is Windows PE, is a minimal Windows 32 operating system that is running the Windows kernel and is intended as a stub that can be run on a machine to allow it to begin an installation. As such, you can think of it as a bootable operating system for the Windows recovery environment, or for installation deployment through System Center Configuration, which is also called SCCM, or System Management Server SMS, or Windows Deployment Services, which is called WDS. So Windows PE जो है, which is called pre-installation environment, जो है वो minimum जो requirements होती है Windows 32 bit operating system उसके kernel के ऊपर वो run करता है. वो run करके you can recover certain things. This is usually used for recovery methods. Then we have MSCONFIG.
This utility helps troubleshoot startup problems by allowing you to selectively disable individual items that are normally executed at startup. So, for example, if I come here, type in msconfig and then hit enter, ये विंडो आती है, ठीक है. And then if I go to startup, no, hold on, yes, services. So as you can see, services, अभी मैं इस पे से चाहूँ, there's like, it's not giving me a number, but there are a lot of services. ये services आप देख रहे हैं, these services they turn on जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ. तो कभी कभी हम सोचते हैं भाई कंप्यूटर क्यों इतना स्लो चल रहा है. वेल दिस इज़ द रीज़न टू. आप जितने सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर पे, जितनी हार्ड ड्राइव भरते रहेंगे, दीज सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड टू रन. काफ़ी सर्विसेज मैं इसमें ऑलरेडी आई कैन सी सो मेनी सर्विसेज विच डोंट नीड टू रन एट द स्टार्टअप, लाइक ASUS, what is this, gift box, desktop, I don't need this to run. There's so many applications here. Cellular time, no, don't want that to run. Bonjour services for Apple, I don't want that to run. I mean, so many services I can think of that I would not want it to run at this startup. For example, if I click on this hide all Microsoft services, these अगर मैं ये जो services है ना मैं click करूँगा, so it will hide all those services which are required to run. So which means कि ये जो सर्विसेज मैं देख रहा हूँ, these are not required to run. मैं सबको बंद भी कर दूँ ना, मेरा कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा, because these are extra services. ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किए हैं उसके, देखें Adobe is not reliant on operating system. तो अगर मैं इसको बंद कर दूँ, then my computer may be running fast. मैं इन सबको अगर बंद कर दूँ, my computer might load even faster, right? But you don't do that because you know you want the convenience. So that's the bottom line for that. DEFRAG, which is called a defragment tool, that's what the DEFRAG is. When you save files to a hard drive, Windows will generally write the file into the first available space on the disk. Windows can store parts of a file in different locations. Say when you edit and increase the size of the original file, fragmented file. Excessive fragmentation can slow down your system. Defragmenting a disk involves analyzing the disk and then consolidating fragmented files and folders so that they can occupy a contiguous space, thus increasing performance during file retrieval system. So defrag is the same thing. Think of that as a room filled with books. If a room, if I एक room के अंदर if I want to go from one corner to the other corner of the room, और सारे उस room के अंदर सब जगह books पड़ी हुई हैं, here, there, everywhere. For me to go from one corner to the other corner of the room, that's going to take me some time. So that is the slow speed this tool is talking about. In order to fix that, आप defragment कर दें. In other words, सारी बुक्स को वो ऑर्गेनाइज कर देगा, शेल्व्स बना के सब बुक्स को शेल्व्स में डाल दी, सब ऑर्गेनाइज कर दी, ज़मीन के ऊपर से सारी बुक्स हट गई. Now if you want to go from one corner to the other, you'll be going much faster. So that's what the defragment tool does. It kind of organizes your data and condenses it so then you have more room to be able to run faster. regserv32. regserv32.exe, also known as the regserv32 tool, allows you to register and unregister modules and controls for troubleshooting purposes. It is often associated with Internet Explorer, but it can be used with any control or module. ये जो सर्विस है ये अलाउ करती है आपको रजिस्टर और अनरजिस्टर करने के लिए. जो भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए होते हैं आप उसको अनरजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पसेस टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इशू. नेक्स्ट, RegEdit.
This, as मैंने बताया था, is a very delicate space on any Windows operating system. Changing anything within regedit, if you don't know what you're doing, you can break the system very easily. This is where the registry editor is used to change values in variables stored in a configuration database known as the registry. It's a very powerful tool. So it's a database of machine language, or 1 or 2 or 1 2 1 2 1 2 0. I mean not 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1. So this is it right here. ये देख रहे हैं? You see zeros. This either is hexadecimal or decimal. 0 or 1. That's the only value you can enter. This, even though आपको English दिख रही है सारी, you're seeing English here, it's actually not in the background. It's just it's a number. और इसमें बहुत has everything in here. आप जो भी है, गेम्स होगी आपकी, कोई भी सॉफ्टवेयर्स होंगे इसके अंदर, देखें सी क्रोमियम, कैनन, ये देखें 1 0 0 0. सो ये जितने भी आपको वैल्यूज दिख रही हैं, this is all machine language. Registry runs your entire system. अगर इसमें से मैं अगर कोई भी डिलीट कर दूंगा ना, so I'm gonna have problem. I'm gonna start getting errors. So you have to be very careful. हम लोग registry के अंदर edits करते हैं. We do make additions in registry. Yes, that's not an issue. Only if you know what you're doing. If you don't know what you're doing, or you don't have proper steps for that, I would highly recommend stay away from that for time being. Alright, next we have is a event viewer. Event viewer हमने देखा, it's a log of collections of all the events happening to your computer. So I just showed that to you. Safe mode. Safe mode, again, same thing. If you boot if when you boot Windows won't load completely, it hangs or whatever, the safe mode जो है वो limited drivers के अंदर boot करता है उसको. And अगर आपके normal Windows boot के अंदर problem हो रहे हैं, then safe mode is a way to test that. Command prompt, सबको पता है. We type in CMD on the start, that black window shows up. That is the command prompt. Also in other languages you can also call it terminal. But Windows का जो command prompt है, it's used for running. You can do running application. You can do a lot of things with that as well. Uninstall, reinstall, repair. Uninstall, reinstall is done through a control panel, and you can repair over there too. मैं quickly आपको show कर देता हूँ. I'm pretty sure most of you already know. You go to start, type in control panel. Control panel की ये window खुल जाएगी. You go to program and features and pick any program. For instance, if I pick Microsoft Office right here, I can click uninstall or change. Change के अंदर it will give me an option to repair also. It is opening on the other window, but ये देखें, repair, remove, enter product key, or add. See, I can remove it, I can repair it, I can remove it, whatever. So basically this is what they're talking about. यहाँ पे आके आप सारे सॉफ्टवेयर uninstall कर सकते हैं properly, और repair भी कर सकते हैं. ठीक है. Common symptoms. Common symptoms में हमें usually जो problems आती है pop-ups आना शुरू हो जाते हैं, browser redirection होना शुरू हो जाता है, security alerts आते हैं, कभी कभी slow performance होती है, internet connectivity issue, internet connect हो रहा होता है, PC OS जो है वो बार बार लॉकअप हो जाता है, या application crash होती है. तो pop-ups क्या है? Pop-ups are both frustrating and chancy. When a user visits a website, in another instance, either another tab or another browser window opens in the foreground, it is called a pop-up. If it opens in the background, it is called a pop-under. That's the difference, pop-ups and pop-under. तो हम जब वेबसाइट में जाते हैं, कभी कभी वो नहीं, एक दूसरी विंडोज खुलना शुरू हो जाती हैं, those are pop-ups.
pop-ups are also a form, they're form of pop-ups which are spams as well. So you can do a pop-up blocker for Windows, for browsers. आप plugin download कर दें. अगर Google Chrome यूज कर रहे हैं, you can download a plugin called Ad Stopper. आप Google में जाके सर्च करेंगे Ad Stopper, it will give you a free plugin to download, and then it will block all your pop-ups. Browser redirection. Farming is a form of redirection in which traffic intended for one host is sent to another by changing entries in a DNS server. This is a DNS spoofing. It's a form of attack in hacking, जिसके अंदर आपको जाना होता है google.com पे. आप ब्राउज़र में डालते हैं google.com और जैसे ही एंटर करते हैं वो चला जाता है cnn.com पे या कोई और वेबसाइट पे. दिस इज कॉल्ड ब्राउज़र रीडायरेक्शन. अमूमन तो हैकर्स आर नॉट गोना ट्रांसफर गूगल टू CNN. they will transfer Google to their server, ताकि सारी information they can steal. So you have to stay alert on that. Security alerts. Phony threats disguised as security alerts to keep people on their toes. When you receive a virus warning, you can verify its authenticity by looking on the website of the antivirus software you use. Or you can go to several public systems such as cert.org. So security alerts काफ़ी some security alerts are legit security alerts. For instance, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया तो आपका एंटीवायरस is going to alert you. Or if you have a Microsoft Security Essential or the Defender, that will alert you. So sometimes those are legit alerts. But there are times जब आप browsing भी कर रहे होते हैं, you get some security alerts. Those are also pop-ups. But then you get some type of security alert saying that your data has been lost. Click here right away, otherwise all your data will be lost. And when you click on that, it will infect your system. So that's a form of another hack. So stay alert. अगर कोई ऐसा message आता है, verify that by going onto their website directly. Don't click on that pop-up or don't click on that alert. Next, we have slow performance. Slow performance, obviously, it's caused by many different things. जो application install की भी होती हैं, that could be causing the slow performance. Your hard drive is running out of space, could cause slow performance. Memory आपकी कम है, processor की speed ज़्यादा नहीं है. A lot of things can happen with the slow performance. Internet connectivity issue, that is basically if you are having any issues with the network or if you are having any issues with the DNS settings as well. The DNS spoofing can also cause internet connectivity issues. Some DNS will be changed कि गूगल के ऊपर जाने के बजाय it will वो डाल देंगे आपकी IP 127.0.0.1. This is a loopback IP. तो आप गूगल डालेंगे, it's not going to go anywhere. You will think your internet is not connecting. So that could be the issue, DNS issue. Next, आपका Ethernet का wire may be unplugged or it's broken, या Wi-Fi का आपका signal नहीं आ रहा. Whatever the cause, internet connectivity issue could be many issues. Now, PC operating system locks up. System locks can occur when a computer is asked to process too many instructions at once with too little memory. Usually the cure for a system lockup is to reboot. If the lockups are persistent, it may be a hardware related problem instead of a software problem. So lockups basically कुछ एप्लीकेशन आपने खोली या बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हुई है, आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो गया, अब बस you cannot do anything. They're calling that as like a lockup. It's not like a complete lockup where you have to enter the password. बस वो mouse कभी move नहीं होगा या mouse move होता है but you cannot click on anywhere. So these type of things जो होती हैं, they're usually happening because of the hardware related issue. There are times कि वो software की वजह से भी होता है, but sometimes it's just that the software जो है वो load करने की कोशिश कर रहा है पर वो लोड हो नहीं पा रहा बिकॉज की मेमोरी ज़्यादा नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, या CPU के पावर ज़्यादा नहीं है, या कुछ भी. तो वो हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से आपके ये लॉकअप्स भी होते हैं. एप्लीकेशन क्रैश, वो क्या है?
When an application crashes, you want to isolate the cause of the crash. It could be a compatibility issue, hardware, or a host of other problem, and you solve it with patches and updates. Application crash is very easy to identify. For example, Microsoft Word आपका crash हो रहा है बार बार. You can start repairing it. जैसे मैंने अभी बताया था आपको option. You can go there and repair it. When you click repair, वो सारी जो missing file है वो install कर देगा. And once that happens, और अगर आपका crash fix हो गया, then you're good to go. अगर उसके बावजूद भी crash हो रहा है, you can uninstall and reinstall that application. अगर उसके बाद भी हो रहा है, then you can do update. Microsoft के update आते हैं for these applications as well. So that update should fix that issue. अगर उसके बाद भी problem हो रहा है, then you need to look at the compatibility. शायद जो word आप use कर रहे हैं वो आपके Windows के अंदर compatible नहीं है. So there are many problems, but you have to do step by step. So more problems. OS update failure. Failed updates for Windows, assuming that connectivity issues do not cause them, can often be traced to setting misconfiguration. Updates जो हैं वो कभी-कभी बीच में से बंद हो जाते हैं या वो इंस्टॉल नहीं होते हैं. That could be the configuration issue as well. Rogue antivirus. Rogue antivirus जो है basically they're actually not an antivirus. They are a form of virus, but it's like a rogue. You know, कहीं से आ गया, no one knows about it. Where did that come from? So this type of thing happens from time to time when you're installing an application. With that application, especially आप download कर रहे होते हैं online, आप install you downloaded the application, now you're trying to install it, and then वो somewhere वो fine print के अंदर पूछेगा कि should I install it? If you don't read, you click next, install. वो rogue antivirus का जो भी है software will be installed. So the purpose of that antivirus, yes, is to protect your system, but it will slow down or it will cause some other issues. Okay. Spam. While spam is not truly a virus or a hoax, it is one of the most annoying thing with which an administrator must contend. Spam is defined as any unwanted, unsolicited email. कचरा जो हमें जो कचरा आता रहता है ईमेल के अंदर, that's spam. Simple as that. ठीक है. Renamed system files. When this occurs, the user can no longer perform the operation associated with the file, such as print, save, and so on. Rename the file. अगर आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन या उसको रीनेम कर देते हैं तो वो फाइल खुलेगी नहीं. For instance, I'm gonna show you something. Okay, so for example ये फाइल है, ठीक है, ये पूरी एक फाइल है. अभी तो ये PDF में खुलेगी. अगर इस फाइल को मैं ख़त्म कर देता हूँ, let's say if I remove the PDF, बोल रहा है if you change the file name extension the file might become unusable. Are you sure? Okay, ये देखें फाइल का ये भी चेंज हो गया icon. If I double click on this, it's gonna ask me what do you want me to do, किसमें खोलूँ मैं इसको. So that happens when the file name is changed also. So कभी-कभी when you download the file, it sometimes does not download properly. Just make sure you put in the proper extension after the dot and see वो खुद ब खुद उसको recognize कर लेगा. So that's a rename the system, rename files. The same concept goes for the system files also. Okay. All right, then we have hide files disappearing. Files disappearing usually does not happen on its own. Files get deleted by a malware or virus or something like that. If any system files have been deleted or disappeared or moved,
फॉर एग्जाम्पल विंडोज सिस्टम 32 के अंदर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है DLL फाइल, अगर वो वहाँ से मूव करके आपने C ड्राइव या D ड्राइव में रख दी, भले डिलीट नहीं की है, देन इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज वो सिस्टम जब लोड होता है वो सिस्टम 32 के फोल्डर में ही जाके देखेगा कि ये फाइल है कि नहीं। अगर वो वहाँ पे नहीं है देन इट्स गोना क्रैश। Hijacked email. One of the easiest ways to spread malware is to capture the email contacts of a user and send the malware as an attachment to all of those in their circle. Hijack email में basically क्या है, somehow you get access, किसी के email का access अगर आपको मिल जाता है और उसके email के contacts 10, 50, 100 जितने भी लोग हैं, they trust that person. अगर हैकर को किसी के ईमेल का एक्सेस मिल गया, they can upload the malware as an attachment. Attachment could be a PDF document or a software or whatever. They can send you an email saying that hey, you know, I need this invoice to be paid. आप जैसे ही वो invoice को खोलेंगे आपको ऐसे लगेगा कि वो legit user से आ रहा है because you know this person, और जैसे ही आप खोलेंगे your computer will be compromised. So कैसे इससे बचा जा सकता है? Well, first of all, अगर for example मैं, someone who knows me, if I send them an email, ask them to pay, the person should actually confirm what am I paying for. So logic really plays a big role. Think logically first and then move forward with that. ठीक है? Access denied. Access denied can happen if the permissions have changed on a certain file. Again, ये automatically नहीं होता है. If your computer is compromised or someone has compromised your Windows, access can be changed. The permission जो है system files की can be changed, which will not allow Windows to boot. Invalid certificate. Trusted root CA. The PKI, also known as Public Key Infrastructure, PKI, it relies upon digital certificate for security. An invalid certificate usually means that the certificate that you have has expired. If this is the case, renew the certificate. So the invalid certificate का जो आता है वो basically आता है for two reasons. Either the certificate is expired or second, the certificate is not authentic. What does that mean? आप कभी कोई सिक्योरिटी अप्लायंस में लॉगिन होंगे, for instance, let's see, do we get cert error here? No. Cert error यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा because I have already done it. But you see right here it says connection not secure. If I go to the certificate right here, this is the certificate. So certificate देखिए valid है in this case. So certificate is not expired because ये 2034 में expire होगी, but I am still getting ऊपर जो आया था not secure. What does that mean? वो इसलिए आ रहा है because this is a certificate generated by the ESXi, VMware ESXi themselves. It's a locally generated certificate. So the certificate is fine. The only problem here is that it is not registered with the public domain, meaning DigiCert या जो भी जो main जो public cert वाली जो companies हैं उसके साथ ये certificate registered नहीं है. That's the reason why I get that. But what you're actually supposed to be seeing, let me see if it shows up in here. Actually, let me not type that. I'll just type in 10.02.03.71. It's going in here automatically because मैंने already इसको accept कर दिया है. Let me see if I can do. Yes, there you go. You see, warning, potential security risk ahead. ये क्यों बोल रहा है? Certificate तो valid है, expire नहीं हुई है, but ये इसलिए बोल रहा है because ये certificate is not registered with the DigiCert or any of the authentic public certificate agency. If I want, I can just go view and then I should be able to even install this certificate. I can download it right here and then I can install it.
फिर नेक्स्ट टाइम मुझे ये एरर नहीं आएगा. बट दिस इज मैं इंडिविजुअल सिस्टम में जाके मुझे करना पड़ेगा. But if I don't want that, I can just get a proper cert from the DigiCert or any other cert management companies, Key Factor or anywhere, and then मुझे ये error आना बंद हो जाएगा. But I don't really care. I can just go directly, accept the risk and move forward because I know कि ये product क्या है. So this is what the certificate invalidity and the insecure comes from. सिक्योरिटी टूल अपने पास क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, रिकवरी console, terminal, and system restore snapshot. So antivirus software, Norton antivirus, Windows Defender, Sophos, all that, these are antivirus software. Anti-malware software क्या है? Anti-malware bytes or malware bytes. Sophos के भी malware software है. So antivirus and malware are two different softwares. Okay, people that get that confused a lot. अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आता है और आपके पास एंटी मैलवेयर का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो वो वायरस को ब्लॉक नहीं करेगा. बट अब जो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू हैव टू पे. इट्स कॉल्ड नेक्स्ट जेन EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन. वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर एंटीवायरस भी होता है और उसके अंदर एंटी मैलवेयर भी होता है. सो इट प्रोटेक्ट्स बोथ. Recovery console is the same as at the boot up. You get either repair or recover. जब हम boot करते हैं USB के through, you can recover the entire system or you can re-image the entire system using that. Terminal मैंने जैसे कि बताया था is the Windows के अंदर PowerShell जो है is a form of terminal. आप start click करें and then just type in PowerShell. Let me open that. This right here is the terminal. You see, Windows PowerShell. This is the terminal for Windows. Command prompt is also a form of terminal. So that's terminal. You can do a lot of things. कितने तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिर्फ टर्मिनल के थ्रू ही मैनेज होते हैं, उसमें GUI नहीं होता. ये जो माउस घूम रहा है और ये सब नहीं होता है. सिर्फ जैसे लिनक्स है, इट्स अ टर्मिनल. ठीक है. System restore and snapshot. Restore point is a copy or a snapshot of your system configuration at a given point in time. It's like a backup of your configuration, but not necessarily your data. Restore points are created in one of three ways: automatically, manually, or during software installation. Restore points जो है वो आपको आपके जो डेटा है उसको बैक नहीं करता है. Restore points जो है वो आपकी जो configuration है उसका एक इमेज बना देता है छोटा सा. तो आज तारीख है जनवरी 14th. आज मैंने सिक्योरिटी अपडेट्स की है, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा अब प्रॉपरली, तो मैं सिस्टम रिस्टोर में जाके कल का या परसों का 2-3 दिन पहले का सिस्टम रिस्टोर कर दूंगा एंड मेरा सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट सिस्टम रिस्टोर मीन्स. वो आपके डेटा को बैकअप नहीं कर रहा है, वो आपकी जो सिस्टम की सेटिंग्स है, अपडेट्स जो होते हैं उसका बैकअप का एक छोटा सा इमेज क्रिएट कर देता है. Best practices for malware removal in Windows. अगर malware remove करना हो, so how do we do that? First of all, identify malware symptoms. ये malware के symptoms find out करें कि malware से हो क्या रहा है. Is it a ransomware malware? What is that? Like, what is it doing? वो basically कर क्या रहा है? That's your first step. किस चीज़ को infect कर रहा है? किसी फाइल को infect कर रहा है? That's your first step. आपने वो आइडेंटिफाई कर दिया. सेकेंड, यू गेट टू क्वारंटीन इन्फेक्टेड सिस्टम. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है अगर वो इन्फेक्ट हो गई है तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. सेकेंड स्टेप ये है उस फाइल को मुझे क्वारंटीन करने का. क्वारंटीन से मुराद ये है कि उसको कंटेन कर देना, किसी रूम में बंद कर देने का. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर क्वारंटीन का ऑप्शन होता है. यू कैन क्वारंटीन द फाइल दैट वे. देन disable the system restore.
टेम्पररली जो सिस्टम रीस्टोर का जो ऑप्शन होता है उसको डिसेबल कर दें। फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिमीडिएट, उसको फिक्स करने की कोशिश करें। अगर वो फिक्स नहीं होता है, यू शुड रिमूव इट अनलेस कि वो प्रॉब्लम काफ़ी दूसरी चीज़ों में फैल गया है। इट्स लाइक अ कैंसर। अगर वो दूसरी चीज़ों में फैल गया, यू हैव टू टैकल ईच वन ऑफ देम। देन स्केड्यूल स्कैन एंड अपडेट्स। स्केड्यूल, मेरे हिसाब से स्केड्यूल की यू डोंट नेसेसरली नीड दैट, बट आप उसी वक्त सारे सिस्टम को स्कैन करें मैलवेयर सॉफ्टवेयर से एंड अपडेट्स रन करें। सिक्योरिटी अपडेट्स जो होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के, वो अपडेट्स रन करें। समटाइम्स उसके अंदर मैलवेयर रिमूवर के भी वायरस मैलवेयर की डेफिनेशंस अपडेट होती हैं। दैट विल रीस्टोर आपका जो भी इन्फेक्टेड फाइल है, दैट कैन रीस्टोर इट। देन ये सब हो जाए, अपडेट्स आपके इंस्टॉल हो जाए, देन इनेबल सिस्टम रीस्टोर एंड क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। आपका सब फिक्स हो गया, ठीक है, यू वेरीफाइड एवरीथिंग। अब सिस्टम रीस्टोर को वापस इनेबल करके उसी वक्त सिस्टम रीस्टोर का उस टाइम का बैकअप आप क्रिएट कर लें। जस्ट इन केस इफ समथिंग एल्स हैपेंस, देन यू हैव अ क्लीन रीस्टोर पॉइंट टू कम बैक टू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एजुकेट द एंड यूजर। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कंपनीज के अंदर आते हैं वो यूजर की वजह से आते हैं, बिकॉज वो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, या यूएसबी घुसा देते हैं उसके अंदर जिसके अंदर वायरस होता है, या किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं जिस वेबसाइट के अंदर वायरस होता है। सो यूजर एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन मोबाइल प्रॉब्लम्स, डिम डिस्प्ले, जो ये यूजुअली ऑटोमेटिकली सेट होता है मोस्ट फोन्स के अंदर, बट उसका जो सेंसर होता है ना, कभी कभी डिम डिस्प्ले का, इफ यू टच दैट सेंसर और इफ यू टर्न दैट सेंसर ऑफ और लाइक क्लोज इट विद योर फिंगर, द डिम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो समटाइम्स जो प्रॉब्लम आती है ना, वो डिस्प्ले बराबर नहीं आ रहा होता है। इट कुड बी बिकॉज आइदर द सेंसर इज बैड or you have a display setting which is very low, so you can always change the setting by going to the brightness. So dim display is not a main issue here, but it's one of the problem. Intermittent wireless जो है in and out होता है, चलता है कभी नहीं चलता, so that could also be an issue with the Wi-Fi signal. It could be an issue with आपका जो मोबाइल के अंदर जो छोटा सा Wi-Fi का जो adapter लगा है, that could be an issue. It could be a software issue as well, और लो सिग्नल या इंटरफेरेंस। आपका फ़ोन माइक्रोवेव के पास अगर आप रख देंगे और माइक्रोवेव भी चल रहा होगा और फ़ोन के ऊपर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, वो फ़ोन के अंदर इंटरफेरेंस आ जाएगा माइक्रोवेव की जो रेज है उससे। सो दैट कुड बी द इशू। नो वायरलेस कनेक्टिविटी, अगर कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, ऑब्वियसली दैट्स आइदर द हार्डवेयर प्रॉब्लम इन योर फोन, assuming कि आपका राउटर बराबर चल रहा है। सो इफ दैट इज वर्किंग फाइन, देन assuming कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप इज आपका जो फोन है उसके अंदर जो वायरलेस कार्ड है, अडेप्टर है, दैट्स प्रॉब्ली नॉट वर्किंग, या तो उसका जो ड्राइवर है इट्स प्रॉब्ली नॉट वर्किंग। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज अपडेट योर फोन। इफ दैट डजंट फिक्स इट, then you know that the problem is with the hardware of that wireless device itself. Bluetooth में भी सेम है, अगर Bluetooth नहीं चल रहा है, you update the security update or the OS update on that mobile phone. अगर उससे भी नहीं चल रहा है, then Bluetooth का जो hardware है, that's probably not working properly. Cannot broadcast to external monitor. If auto detection is disabled or just not working, then you may need to configure the output device manually. Usually जो broadcast to external monitor है उसके अंदर automatically होता है, you just connect and वो broadcast करना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं हो रहा है, then you have to manually set that. अगर even then it's not happening, then check the wire or check the other device, which is in this case it could be a TV or whatever. Touch screen is non-responsive. टच स्क्रीन नॉन रिस्पॉन्सिव के अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं। फर्स्ट, आइदर द स्क्रीन इज डैमेज और
the internal hardware is damaged. Your phone was dropped, or screen is cracked, या उसकी touch sensitivity का जो sensor है, that's bad. So replacing the touch screen usually solves that issue. If not, then replacing that specific hardware, which the sensor, replacing that should fix the issue. Apps not loading. Apps not loading could cause slowness. तो अगर आपका जो फ़ोन है, आपने फॉर एग्जांपल आईफोन है, विच इज़ आईफोन आपका चल रहा है आईफोन 6. उस आईफोन 6 के अंदर आपने डाउनलोड कर दी आईफोन iOS 16 वर्जन, जो कि आईफोन 14 के लिए बना है. मोस्ट लाइकली वो 6 के अंदर डाउनलोड होगा नहीं, बिकॉज आईफोन रियली रिस्ट्रिक्ट्स दैट. बट वो स्लो हो जाएगा, या ऐप डाउनलोड नहीं होगी, या ऐप लोड नहीं होगी बिकॉज ऑफ दैट, या तो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यू होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऐप विल नॉट लोड. एंड्रॉइड के अंदर द थिंग इज लाइक गुड थिंग इज दैट यू कैन डाउनलोड इट इवन दो इट्स नॉट सपोर्टेड, right? You can download it and you can manage to install it, but then app may not download because the hardware is not able to load that application. So there are ways around it, but it's not a sufficient way. Again, slow performance होती है उसी की वजह से. जो भी आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से स्लो परफॉर्मेंस होती है. मोबाइल का जो प्रोसेसर है इज़ नॉट एज फास्ट. आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया, बट हार्डवेयर उसका पुराना है, सो इट्स नॉट गोना वर्क एज फास्ट. अनेबल टू डिक्रिप्ट ईमेल, ये यूजुअली इतना होता नहीं है, बट इस सिनेरियो के अंदर if your phone is unable to decrypt the email, that could be the issue of the service itself. Extremely short battery life. बैटरी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. इसके भी दो रीजंस हो सकते हैं. could be more than 2 reasons actually. 2 common reasons are आपकी बैटरी जो है has reached its end of life, तो replacing the battery might fix the issue. That's one. और सेकंड, आपकी बहुत सारे एप्लीकेशंस इन द बैकग्राउंड रन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, एंड इफ दैट्स द केस योर बैटरी विल ऑलवेज रन शॉर्ट. अगर आप नई बैटरी भी डालेंगे, it will still be the same issue. My suggestion would be, especially if you're an iPhone user, run your phone in a battery safe mode. उसके अंदर बैटरी का आइकॉन जो है ऊपर येलो हो जाता है, तो उसके अंदर जो है कम से कम एप्लीकेशंस इन द बैकग्राउंड रन करेगी. उसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड. आई पर्सनली ऑलवेज रन माई phone in battery saving mode. Android also has a power save mode. That should save your power. Okay, next we have overheating. Overheating जो है is also multiple reasons for that, but अगर lot of processes, बहुत सारे applications are working, आपके फ़ोन को बहुत extensively काम करना पड़ रहा है to keep those applications running, which means वो processor जो है बहुत गर्म हो रहा है, that means your phone is heating up. That's one. Second, processor is not, आपका phone is not properly ventilated, so, or is not properly vented. आप ट्राई करना फ़ोन को आप एक डब्बे में बंद कर दें, ठीक है, और उसके ऊपर YouTube चलाना शुरू कर दें, हाई रेजोल्यूशन YouTube. आपका फ़ोन गर्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट वेंटिलेटेड. सो अगर वो प्रॉपरली वेंटेड नहीं है, या तो बहुत ही हैवी चीज़ उसके ऊपर रन कर रही है, देन इट्स नॉट गोना वर्क. ओके, फ्रोजन सिस्टम, जो एप्लीकेशंस है कभी कभी स्टक हो जाती है, फ्रीज हो जाती है. So that could be the issue with the less amount of memory or less power on the processing CPU. Could be any one of those reasons, or the application जो है आपकी is crashing. Any of this can also freeze the system. No sound from speakers. ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है या हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है.
इनएक्यूरेट टच स्क्रीन रिस्पॉन्सेज, टच स्क्रीन के इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, आप लेफ्ट पे टच करें तो माउस वो राइट की एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर दे, या राइट की एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें तो बॉटम की एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर दें। ये यूजुअली अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ह्यूमिडिटी भी आ जाती है ना, या वाटर के ह्यूमिडिटी स्क्रीन पे, उसकी वजह से भी होगा। अगर आपकी फिंगर वेट है and then you will try to touch your screen, it will do that. That's one issue. Well, that's one symptoms of having this inaccurate touch screen response. Other is आपकी screen जो है is getting bad, or the hardware of the screen itself has broken screen के अंदर if you touch on one side, it may be selecting the other application on the other end. System lockout is usually after multiple amounts of incorrect password will lock your system out or your phone out, or गलत passwords, or in certain instances if you have a setting, आपकी phone के ऊपर setting है कि within this many minutes the phone should lock out or the system should lock out, it will lock that out as well. So different settings will do that. Usually system lockouts don't happen on its own unless आपकी कोई settings है उसके अंदर, या कोई applications है which is locking out your system. Tools जो है you can use in this is hard reset, one of them. Hard reset is basically, a hard reset should always be done as a last resort. आपको you should not use that quite often. With Apple iPhone, iPad and iPod Touch, forcing a restart on the device is done by pressing and holding a sleep and wake button and home button at the same time for at least 10 seconds until you see Apple logo. नए नए फ़ोन्स जैसे जनरेशन उसकी चेंज हो रही हैं, उसके बटन्स के अलग अलग होते हैं. होम बटन तो अब ख़त्म हो गया है एप्पल के अंदर, बट sleep button and the power button को आप एक साथ दबा के रखेंगे, so it will ask you to reboot or shut down. Soft reset, not as forceful as a hard reset. A soft reset keeps the data of running application. With the Apple iPhone, iPad or iPod Touch, press and hold the sleep wake button until the red slider appears and then drag the slider to turn the device off. ये सॉफ्ट रीसेट है. जो हार्ड रीसेट है ना, उसके अंदर वो सारा जो आपका डेटा है वो भी डिलीट कर देता है, और योर एप्लीकेशन, योर फोन गेट्स इनटू ए रिकवरी मोड. Quite often we don't do that, but that's one way of fixing the issue. Closing running application. Android के अंदर there's a button which will show all your running applications and you can click close all applications at once. iPhone के अंदर you swipe up or you hold and swipe up, and then वो सारी application you can swipe and close it one by one. iPhone does not, at least I haven't seen. There has to be a way of closing all at the same time, but it's not a simple button where आप एक button दबाएं iPhone में and then it closes everything. It's not visible. Reset to factory default. When you need to get to a safe state, such as when you are disposing of a device or assigning it to a new user, you can reset it to a factory default settings. To do this, tap settings, then general, and then go to factory reset or default settings. किसी को आप दे रहे हैं फ़ोन, बेच रहे हैं आप फ़ोन, या तो फिर giving it back to your company, you can factory reset it to its original settings. For security reasons, आपकी जितनी भी information will be reset and deleted. Adjust configuration settings. Configurations and settings need to be personalized to the user using the device. That's all that is. Uninstall, reinstall app. iPhone के अंदर आप application को दबा के रखें, and then you can the menu will pop up and you can install the app that way. Android के अंदर you can go to the systems app and वहाँ पे जाके each app you can uninstall it that way as well. Force stop. When an app is unresponsive, you can do a force stop to close it. With iOS, press the home button twice quickly and small preview of your recently used app will appear, and swipe up to close that application. और Android के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर when you go inside that application, वहाँ पे ऑप्शन होता है force stop or uninstall the app.
you can do either one, but force stop will force it to stop. Signal drop and weak signal are a common culprit behind dropped signals. So before engaging in communication, signal strength on the device should be evaluated. If the signal is low, for example, no bars, then change the location. Signal drop होते हैं, that could be the cause of the less signal, weak signal. उसकी वजह से सिग्नल बार बार ड्रॉप हो जाते हैं. इन सर्टेन एरियाज सेल फोन टावर के सिग्नल बराबर नहीं आते हैं, so that could be the reason why. Power drain. While apps usage and so on can contribute to power drain, one of the biggest offender is the search for signal. जो बार बार signal जो search करता है ना, that actually also drains a lot of power. अगर आपके सिग्नल कम आ रहे हैं and then आपके फ़ोन को बार बार सिग्नल को सर्च करना पड़ता है to have a better call quality, then that will also drain your power. Now आप recognize करें, when you are driving, you're from a state to another state, you go through different cell phone towers. And when you're using your GPS, your battery will drain pretty fast, because not just because of the GPS, but it's also because every time आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके सेल फोन को constantly सर्च करता है, वो सर्च करता है सेल फोन टावर्स के सिग्नल के लिए, and every time it does that, it drains the battery. Yeah. Slow data speeds. Slow data speeds can be caused by too much interference. अगर बहुत interference आ रही है, then आपकी जो data speeds हैं can slow down. और आप जिस एरिया से जा रहे हैं, they have 3G tower over there only, so that could also be the slow data speed cause. Or there's too much congestion in that area. New York City में आप जाएंगे, if they have limited towers over there, in downtown New York, वहाँ पे lots of people are using it, so that will be the congestion, the speed. So intentionally, cell phone companies, they put a quota or a limit on your usage when you're in certain areas as well. Unintended Wi-Fi connection. When auto connect is enabled on your device, it is possible for them to seek out open Wi-Fi networks and try to connect to them automatically. This I would highly recommend to turn it off. Usually यहाँ पे US के अंदर when you आप जा रहे होते हैं, मैकडॉनल्ड्स में गए या स्टारबक्स में, कहीं पे भी गए, वहाँ पे वो ओपन नेटवर्क होता है. ओपन नेटवर्क के लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है. अगर वो आपने इनेबल किया हुआ है, तो आपका फ़ोन या लैपटॉप या जो भी है, वो ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाएगा. विच फॉर कन्वीनियंस वाइज इट्स गुड, बट सिक्योरिटी वाइज इट्स नॉट, बिकॉज अगर वो कनेक्ट हो गया, then it's an open network, it's insecure network, anyone can read that traffic. So usually open networks are not secure, so you should never connect automatically onto the open network. Unattended Bluetooth pairing. When anonymous devices are allowed to connect to Bluetooth enabled devices, this is known as unattended Bluetooth pairing, and it presents a security threat. So अगर आपने ये सेटिंग्स आपकी इनेबल की हुई है कि जो भी ब्लूटूथ हो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, सो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना डिवाइस, हैकिंग का कोई भी डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन पुल कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स जो भी है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर यू हैव, आई कैन पुल ऑल दैट. लीक्ड पर्सनल फाइल डेटा. When authorized users access devices through unintended connections or unauthorized user access absconded devices, they can access the data on the device. Every firm should have a policy for protecting data encryption. So leaked personal files and data is just basically unauthorized access to computers, या device, या emails or whatever. This can cause a data to be leaked. So most of the companies जो होती है, उनकी data protection की policy होती है, which you sign every time you on board करते हैं, आप वो document sign करते हैं कि you will be careful, you are liable for this data, blah, blah, all that stuff. So you sign that policy, and then you are liable for any data leakage. Data transmission over limit. Going over the limit on data plans can be symptomatic of a hacked account. Closely monitor account usage. आपने 20 GB का प्लान दिया,
डेटा पैकेज, और हर महीने आप देख रहे हैं कि आपकी 50 GB की यूजेज हो रही है. सो सो वेयर इज दैट गोइंग? तो इट कुड बी कि आपका वो डेटा प्लान है जो भी है is hacked, someone else is using it, watching movie, doing other stuff, whatever. So monitor your account closely and see where those data transfers are being made. Unauthorized account access. Unauthorized account access can give users access to personal files and data to which they should not have access. Closely monitor account usage. Account usage could be any account, bank account or computer account, AD account, whatever. तो फॉर एग्जांपल मैं अपने कंप्यूटर के अंदर, कंपनी के कंप्यूटर के अंदर सैटरडे को मैं ऑफ होता हूँ. सो सैटरडे टेक्निकली आई शुड नॉट बी एक्सेसिंग माय अकाउंट, बट मुझे पता चला कि सैटरडे को माय अकाउंट वाज एक्सेस्ड. सो हाउ डिड दैट हैपन? I was not there, right? Someone accessed it. So that is an unauthorized access. Someone tried to access it. Could be remotely or in person or whatever, but that needs to be identified. Unauthorized root access. Security holes in mobile device operating systems can leave backdoors into which users can get unauthorized root access. The majority of these holes are closed by patches and upgrades as soon as they are discovered. So iPhone की जब फर्स्ट जनरेशन आई थी, you could jailbreak your iPhone. जेल ब्रेक से क्या अलाउ करता था कि आईफोन के अंदर आप थर्ड पार्टी की एप्स डाउनलोड कर सकते थे. अभी जो है आईफोन के अंदर आप सिर्फ आईफोन की जो एलोकेटेड एप्स हैं वही डाउनलोड कर सकते हैं, विच आर प्रोविजन बाय आईफोन. यू कैन एप्पल, यू कैन ओनली डाउनलोड दैट. बट आप जब जेल ब्रेक करते हैं, एंड यू कैन स्टिल डू द जेल ब्रेक, when you do jailbreak, it allows you to download third party application. So उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है. फ़ायदा ये है कि आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं जो एप्पल ने ऑथराइज नहीं किए, बट दे आर गुड एप्लीकेशन, यू कैन डाउनलोड दैट. बट विद द जेल ब्रेक कम्स मोर रिस्क. मीनिंग जब आप जेल ब्रेक करते हैं, जो रूट का एक्सेस होता है इज़ वाइड ओपन. So if anyone were to hack onto your phone, they can get that root access very easily. Root access जो है वो super admin का access होता है. With that you can do anything. Then we have unauthorized location tracking. While location-based data can be very valuable when you are using maps and trying to find sites, it can also give away sensitive information if accessed by someone who should not have it. तो अमूमन लोकेशन की इंफॉर्मेशन इज़, यू नो, आपकी जो एप्स होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है शेयर द लोकेशन. अगर मेरे पास कोई ऐप है जो कि है आई डोंट नो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप है फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डजंट नीड टू नो वेयर आई एम एट. माइक्रोसॉफ्ट उसको क्या करना है मेरी लोकेशन से, तो आई वुड नॉट गिव माई लोकेशन टू दैम, आई वुड टर्न दैट ऑफ. सो अनऑथराइज्ड लोकेशन अगर किसी के पास उसका एक्सेस आ जाता है, that can be misused as well. Unauthorized camera microphone activation. Usually the camera and microphone can be activated remotely and allow a troublemaker to spy on you. It is suggested that when not in authorized use, you cover the camera and microphone to keep them from providing any data if they are remotely accessed. So कैमरा एंड माइक्रोफोन को रिमोटली कैन टर्न ऑन किया जा सकता है. अगर आपका लैपटॉप या जो भी है कंप्यूटर हैक हो गया है, हैकर कैन रिमोटली कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑन कर सकता है. वो आपको देख सकता है, वो आपको सुन सकता है. यही फ़ोन के अंदर भी होता है. फ़ोन का कैमरा एंड माइक्रोफोन भी रिमोटली ऑन हो सकता है. अमूमन आपको टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं ऐसे, उसमें लिखा हुआ होता है कि क्लिक हियर, यू नो, बिकॉज योर अकाउंट इज़ बिन हैक्ड और व्हाटएवर, एंड जल्दबाजी के अंदर आप वो क्लिक कर देते हैं लिंक. एज सुन एज यू क्लिक दैट लिंक, योर फोन कनेक्ट्स टू द हैकर्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. वहाँ से वो जो भी कमांड टाइप करेंगे टू टर्न ऑन योर कैमरा, टू टर्न ऑफ योर कैमरा, टू माइक्रोफोन को टर्न ऑन करने के, दे कैन डू दैट एंड दे कैन ऑल्सो गेट योर लोकेशन. ओके, there's a software for that on Linux, very widely used, Storm, I think Storm Breaker or something, and it does exactly what they're talking about here. High resource utilization. High resource utilization can be telltale sign that a device is running more than you think it should be. Perhaps the drives are being searched or the camera is recording your every move.
ओके, तो कभी कभी जो फ़ोन बहुत ही गर्म हो रहा है या उसकी रिसोर्स बहुत यूटिलाइज हो रही है, उसके मैंने पहले रीज़न बताया था आपको, बहुत सारी एप्लीकेशन रन कर रही हो, दैट कुड बी द रीज़न। पर अगर वो फ़ोन ऐसे हैक हो गया है तो हो सकता है कि जो हैकर है इट्स गोइंग थ्रू योर फाइल्स, आपका सारा डेटा सर्च कर रहा है, तो डेटा सर्च करने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से भी वो हाई रिसोर्स यूज़ कर सकता है। या तो वो आपके कैमरा को ऑन करके सब रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर एवरी मूव आपका रिकॉर्ड करने के अंदर इट टेक्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, पावर चाहिए उसको। उस पावर की यूटिलाइजेशन की वजह से आपकी जो रिसोर्सेज है वुड बी ऑल्सो हाई। सो अगर आपका फ़ोन हमेशा हाई रिसोर्स के ऊपर चल रहा है, या हमेशा आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, या हमेशा आपकी फ़ोन की बैटरी लो हो रही है बहुत क्विकली, देन look at these signs that there might be something going on. फ़ोन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंटी मेलवेयर, एंड्रॉयड के अंदर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्कैनर, इट्स आपकी सारी ऐप को स्कैन करके वो बता, इट कैन शो यू इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट। Wi-Fi analyzer, this is a tool that can show you the Wi-Fi channels and it can be useful in problem detections. Wi-Fi analyzer जो है बेसिकली आपको बताएगा कि Wi-Fi के सिग्नल्स नियर बाय हैं, क्या है, नहीं है। It will show you all that. um, there's a, hold on, I can't even show you. There is a free software आप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन पे I'm not sure if they have this application, but for the laptops आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम, it's the same tool as Wi-Fi analyzer. So ये लोग they're saying that it can be useful in problem detection. Why they're saying that? And until you see, you're not gonna know. So this is the tool right here. Okay, this is a free tool. ये अभी स्कैन कर रहा है एवरीथिंग इन दिस एरिया, एंड यू कैन सी, देखिए किसी का हिडन नेटवर्क भी है। जो ये हिडन नेटवर्क है, अगर मैं इसमें स्टार्ट में जाके इसको नेटवर्क पे करूँगा, आई एम नॉट गोना सी दिस नेटवर्क, पर ये किसी का हिडन नेटवर्क चल रहा है, वो मुझे मैक एड्रेस देता है, वो मुझे उसका सिग्नल भी बता रहा है कि देखो उसका सिग्नल है थोड़ा लो है, -70, सो दैट्स लो। कौन से चैनल के ऊपर वो चल रहा है, चैनल 11, so I know that this is a 2.4 gigahertz network and it has G, N and AC bandwidth, ठीक है ना, it even shows me that. And in some area it will also show you the vendor, like कौन सा प्रोडक्ट का डिवाइस है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपन वेब, ये ओपन यूज कर रहे हैं, सो एनीवन कैन ज्वाइन इफ दे नो कि ये नेटवर्क है। So the thing is, this is not a good way of doing this, because जिसने भी ये रखा हुआ है वो ये समझ रहे हैं कि मैं अपना नेटवर्क को छुपा दूंगा तो कोई भी कनेक्ट नहीं हो सकेगा, but that's not true. Anyone can still connect to it because if they know what they're doing, आप स्कैन कर दिया, I got the MAC address and I can still connect to this network by force, ठीक है। So that's that. Now if I change this to RSSI मेन, सो देखें, अब ये देखें RSSI, देखें जो वैल्यू है इसकी, ये सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, देखें यहाँ पे ये सारे ग्रीन में ना, ये सारे अच्छे सिग्नल है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी IoT डिवाइस, मैक एड्रेस यहाँ पे बताता है, आपको स्पीड भी शो करता है, एंड देन इट ऑल्सो टेल्स यू द ब्रांड और द वेंडर, कौन सी इंक्रिप्शन है, WPA2, और ये आप देख रहे हैं WPS, ये देखें, ये मुझे ये भी शो करता है कि यहाँ पे कितने नेटवर्क के WPS ऑन है। ये WPS के थ्रू हैक करना इज़ वेरी इजी। दिस वन इज़ WPS, दिस TP लिंक किसी का है, नेटगियर का डिवाइस है। सो ऑल ऑफ दीज नेटवर्क्स आर हियर विच इज़ इनसिक्योर नेटवर्क। Speeds are very good, but they're insecure. Okay,
So all right, so that's that. We'll stop and go there. So that was Wi-Fi analyzer. Cell phone tower analyzer. um, what the Wi-Fi analyzer can do for Wi-Fi, the cell phone tower analyzer can do for cell phone towers, showing a graphical representation for traffic and signals. ये फ़ोन के बट इसकी ऐप शायद आती हो, मैंने यूज़ नहीं की है, बट आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ अ ऐप जो कि आपको बता देगा कि सेल फोन की कंजेशंस क्या हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. Backup and restore. In the Apple world, there's iTunes, iCloud, and Apple Configurator. The latter simplifies mass configuration and deployment on iPhone, iPad, and iPod Touch, and it is intended for use by school, businesses, and institutions. The Apple configurator जो है वो mostly businesses and institutions के अंदर use होते हैं, schools and such. घर के अंदर we have used like a lot like iTunes and iCloud, उसके अंदर बैकअप हो सकते हैं. Google के अंदर जो Android phones होते हैं, there is Google Sync which allows you to sync your phone, desktop and tablet devices. Last in the और ये तो Google का हो गया, ये Google का जो होता है, and then you can do it on OneDrive and things like that. And Microsoft वर्ल्ड के अंदर there is OneDrive which has been discussed previously. OneDrive के अंदर आप सारा अपना बैकअप कर सकते हैं, डेटा रीस्टोर कर सकते हैं वहाँ से and things like that. So Google, Microsoft and Apple, the three main vendors have their own backup and restore tools as well. So this is the end of our chapter 22. This was a little bit of a long chapter for let me see what we covered. So this chapter was troubleshooting theory, operating system and security for mobile devices as well. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, make sure कि आप like and subscribe करें and also make sure to hit that bell notification icon. अगर आपके कोई भी questions हैं, comments हैं, concerns हैं, feel free to type them in the comment section and I will get back to you with the update. अगर आपको कोई वीडियो देखना चाहिए, कोई वीडियो if you want me to make for any other training or any other installation, let me know and I'll be more than happy to create that. Until then, we're gonna end this session here. We will start our next session at 12:30.